Hello KG2. Good morning. So KG2, have you understood what is singular and plural? Yes, singular and plural are the numbers that is given for one and many. Okay? नेमिंग वर्ड्स के लिए नंबर्स होते हैं, वो एस या जिसमें एस नहीं होते उससे पता चलता है. लाइक दिस इज अ पेन and these are two pens. This is a pen and these are two pens. तो यहाँ पर हमने एक के लिए पेन बोला और दो के लिए पेन्स बोला. Likewise, this is an animal and these are two animals. This is a tape and these are two tapes. So likewise, revise at home the singular and plural words and action words I have told you, isn't it? What are action words? There are many action words. Today we will do first oral of action words. Okay. And then oral of all sound words that I'll tell you later. Okay. So what are actions? The actions are the words or actions are something that we do with the help of our body. जो हम अपनी बॉडी से करते हैं और अपने माइंड से करते हैं वही तो एक्शन होता है. जैसे What I am doing now? मैं अभी क्या बोल रही हूँ? I am speaking. मैम क्या कर रही है? बोल रही है. I am seeing. मैं अभी देख रही हूँ. I am standing. खड़ी हूँ. I am clapping. I am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am counting. I am counting. I am jumping. I am smiling. I am itching. Okay. Likewise, there are many action words. I am drinking. I am eating. I am swimming. So likewise, as I do the actions, you also do the actions. So what are the different action words? Eat, drink, write, read, stand, sit, sleep, bath, cook, swim, dance. These are the different action words that you need to practice at home. Daily practice करना action words का. ठीक है? कितने सारे actions आप करते हो? You should know each and every word in English. जैसे अभी मैम आपको क्या कर रही है? Teach कर रही है, पढ़ा रही है. पढ़ाने को teaching करना बोलते हैं. और आप क्या कर रहे हैं? आप study कर रहे हैं. That means आप पढ़ रहे हैं. तो टीच करना और स्टडी करना ये दोनों भी एक्शन वर्ड्स है. ओके. गाड़ी चलाना, इट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. दौड़ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. वॉक, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. ओके. सो देयर आर मेनी एक्शन वर्ड्स दैट यू शुड नो orally. At least you should know the action words orally. Now I will repeat the orals daily. On a daily basis I will repeat the orals. Okay. Now I am going to teach you some new sound today. And today's topic is O, A, together. O and A together. O
क्या बनना चाहिए दोनों को मिलकर? जैसे आई और ई दोनों मिलकर क्या बना था? आई। वैसे ओ और ए दोनों मिलकर बनेगा, एनी गेसेस? दो साउंड नहीं आएगा, दो लेटर का एक ही साउंड आएगा. इट विल बी ओ. O. So now I am going to write O A O A O A many times. O A. O और A क्या बोलेंगे? O. O A दोनों मिलकर क्या बोलेंगे? O. Two letter one sound. जब दो वॉवल्स एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवल का नाम लेते हैं. So here it is O. So O and A together say O. O A. क्या बोलेंगे दोनों मिलकर? O. O A. Together they will say O. And let us add some letter to it. If I add G sound here, so it will be like G O go. L O low. B O bow. And K O go. Now let us add one more letter to it. G O A T goat. B O A T boat. And suppose I have written C here. तो C और L एक साथ क्या बने? Club. This exercise is not in your book. It is there in your book, I guess, but it has only words. No explanation is there. C L club O T float. And here K O T goat. So here in this oral part we have learnt that O and A together say O. G O A T goat. C L O A T cloat. B O A T boat. C O A T goat. Okay. So let us add some more words that says O A. O A. O A says O. 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 And we will read it. O A say O. Now I am going to write R O D road. R O D road. S O P so. You remember जब मैम EVS पढ़ा रही थी तो मैम ने बोला था कि थोड़े दिन बाद आप जब O A साउंड पढ़ोगे, O साउंड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोप की स्पेलिंग SOAP क्यों है. तो इट इज S O P soap. S O P soap. K O L coal. कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला. Now next is L O D load. When we have any luggage, that is called a load. That is called a load. Now the last one is, I will start my word from here itself. O K. Oak. Do you know what is oak? Oak is a tree. Okay. And आपको एक अमेजिंग फैक्ट ओक के बारे में बता रही हूँ, ठीक है.
ओक एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ईयर्स तक रह सकता है। इट कैन लीव अप टू 1000 ईयर्स। आपको तो पता भी नहीं होगा ना 1000 कितना होता है। 1000 100 से बहुत बड़ा होता है। उतने साल तक ओक का ट्री जो होता है लिव करता है अर्थ में। ओके, इट कैन लिव अप टू मोर देन 1000 ईयर्स। और जो ओक के ट्री में जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो फ्रूट्स बहुत सारे एनिमल्स को बहुत पसंद होता है और वो वही फ्रूट्स खाकर जीवित रहते हैं। सो ओक ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट ट्री है ना, उनमें से एक ट्री है ओल्ड। और अभी दुनिया में सबसे पुराना जो एक ओक ट्री है ना, वो 1500 ईयर्स ओल्ड है। सो oak is a tree. Oak is a tree. So let us read these words one more time. We are learning O sound words. O A together say O. O A together say O. And what are the O sound words? G O A T goat. B O A T boat. R-O-A-D road, L-O-A-D load, C-L-O-A-T cloud, C-O-A-T coat, S-O-A-P soap, C-O-A-L coal, O-A-K oak. And one more word I want to add here, it is O-A-T oat. You know ना what is oat? Oat क्या होता है? Oat is a grain, है ना? Oats को मिल्क के साथ खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट है oat. So the words are G-O-A-T goat, B-O-A-T boat, R-O-A-D road, L-O-A-D load, C-L-O-A-T clot, C-O-A-T coat, S-O-A-P soap, C-O-A-L coal, O-A-T oat, O-A-K oak. Okay? So shall I start written also? Some time is left, so I should start written also. Okay? So open your notebooks. Open your notebooks. Put today's date. Put today's date. What is the date today? Today is 6th of October. This is the margin of your notebook, isn't it? Put today's date. Today is 6th of October 2020 and the day is Tuesday. Today is 6th of October 2020 and put CW and the heading is O-A sound words. O-A sound words and our first word is soap. An oval, a big oval, and the spelling is, and your exercise is read and write. Sorry. Read and write. And how many times do we write daily? We write 5 times a word. एक word को हम 5 times लिखते हैं. I will give you only 3 words today. The first one is, what is the first one? It is a
2, 3, 4, 5. Number 2. What is number 2? Number 2 is, wow, very easy. See, 2 slanting lines, okay, 1 sleeping line. I'm just making the line, and water. Can you tell me what floats on water? Water के ऊपर क्या float करता है? Yes, this is a boat. B-O-A-T, boat. And write it 5 times. B-O-A-T, boat. B-O-A-T, boat. B-O-A-T, boat. B-O-A-T, boat. B-O-A-T, boat. 3, 4, 5. Now the last one is, I told you, last one is a road, and a road is black in color. So this is the road. This is the road, and road has, what does a road have? A road has white strips on it. Road पे क्या होते हैं? White strips होते हैं ना? So I am making white strips. See. So what is this? This is a road. What is the spelling of road? R-O-A-D, road. Road, 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 road. You have to write, learn and write, read and write OA sound words 5 times each. Okay. This road can be a curvy also. इसको आप थोड़ा सा कर्वी भी बना सकते हो, क्योंकि रोड तो हमेशा स्ट्रेट नहीं होते हैं ना, रोड थोड़े से राउंड में भी हो सकते हैं. Okay, let me try it a round one, a little round one. Okay, like this. जो आपने हिंदी में सड़क पढ़ा है ना, वही है. सड़क R-O-A-D, road. R-O-A-D, road. So here my road is ready, and it has white strips. So what is this? This is a road. R-O-A-D, road. One more time. O-A say O. So sa, O, p, so, b, o, t, boat, r, o, d, road. S-O-A-P, so, B-O-A-D, B-O-A-T, boat, R-O-A-D, road. So KG2, that's all for